Hello, everyone. Welcome back to another episode of Mixtape Book Club. Today, I have with me Usman Malik, who is a doctor by profession and also a sci-fi fiction writer. Welcome, Usman. Thank you very much for having me. I'll just start right off. I am pretty sure मैंने भी आपसे ये सवाल पहले भी बहुत दफा पूछा हुआ है, आपको और लोगों ने भी पूछा होगा कि your day job is a medical professional, तो आपने sci-fi क्यों लिखना शुरू किया? But what I would like to know कि even if you have you started made a second profession out of a passion, why did you pick sci-fi as a genre? You at one point mentioned कि हमारा जो देसी oral storytelling की history है, that was the source of sort of an inspiration. So I would like you to elaborate a bit on that. So I wouldn't say that desi oral storytelling ki necessarily history, but I would say कि हमारे indigenous जो stories हैं, हमारी दास्तान गोई है rather, और हमारी जो epics हैं, हमारी दास्तानें, हमारी अपनी stories हैं, उनमें religious stories भी आप कह लें, क्योंकि हमारा religious stories भी तो mystical और magical और miraculous elements से भरी होती है ना. Yeah. So fantasy or the irreal, as some scholars call it, uska intrusion upon reality is well established in religious texts anyways. तो हम जब छोटे थे तभी हम कहानियां सुनते थे ना कि जुमेरात वाले दिन रूहों का दिन है, जुमे का खास दिन है, so there's sacred spiritual element. So those metaphysical and religious elements वो भी for a lot of us are well springs from which our own development as writers or doctors or professionals or artists begins. So I think absolutely reading and growing up in that milieu, we have access to those stories, those indigenous subcontinental stories, South Asian stories, those and if we talk about only religious stories, well, then Arab stories as well, Quranic stories. And from there, for me, it was sort of a natural progression to being impressed by or fascinated by more mystical elements from other cultures. C.S. Lewis' The Chronicles of Narnia is a Christian allegory. Yeah. A lot of people don't know that, but it's a Christian allegory. He was a deeply religious man. And so Chronicles of Narnia started off with that. Even Aslan, the lion, Chronicles of Narnia is actually, in a way, Jesus Christ, the coming of Jesus Christ, the Savior. So those sort of religious elements are often mixed. So I suspect some of that also contributed to me growing up in this environment and being attracted to these stories from an early age, at an impressionable age. And then later on, of course, I found myself impressed by, or rather interested in stories by Enid Blyton, Christopher Pike, R.L. Stein, and then more and more authors as I grew up. So Midnight Norways में जो it's a compilation of short stories जो हैं, and the way you have taken those indigenous aspects and combined it in a presented it in a sci-fi format, I would say. For example, there's a story where you have depicted the Lahore ki jo walled city hai. Ab Lahore ki walled city, some might even say कि has been done to death in fiction हो गया. Culture का जब भी बात आती है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रोल होता है उसका, photography में भी होता है. So that was a very different sort of way of presenting that environment or that पूरा सारा walled city का जो एक ecosystem associate होता है in a sci-fi format. So just और जो जिस तरह की बाकी stories भी हैं, मोहनजोदाड़ो का एक aspect आपने लिया, and then you sort of present in one of the stories you also highlighted APS wala jo incident hai. So just share कि for various stories, how did you what was, I won't say use a very repeated word of the inspiration, but how do you what's your writing process like? So writing process I think is different for me with every story. I'm not a very prolific writer. I I don't write every day. I sometimes write in binges. I read a lot, pretty much every day, but I don't write every day. So मेरा जो process है वो differ करता है from story to story, from piece to piece.
The story that you're referring to, उसका नाम इश्क है, which is set in Lahore's अंदरून शहर. The story of that is कि उसकी setting पहले मेरे पास आई, and the story came to me later. And setting, I've told the story I think before as well to some people. कि my father was visiting me when I was in the US, and he told me the story of Teddy Gully, जो कि लाहौर में बड़ी मशहूर है टेडी गली. और हमारे पास उर्दू में मुहावरे भी हैं कि पतली गली से निकल जाना. So, but we don't think about what that means, कि वो पतली गली कितनी पतली है, कि चोर की हम बात करते हैं कि पतली गली से निकल गया तो इसमें ऐसी क्या बात होगी. So people don't realize how interesting that geography actually is. It actually is an alley that is so patli कि only a patla person go through it. इतनी पतली कि वो जिसके बारे में एक वो टीवी के वो हमारे कौन है वो अफसाना निगार हैं शायद, ये टीवी नहीं, टीवी के अनवर मकसूद है आई थिंक, जिन्होंने एक बार कहा था कि अगर एक तरफ से मर्द आ रहा और एक तरफ से औरत आ रहा तो बीच में सिर्फ निकाह की गुंजाइश रह जाती है. So that is how narrow these alleys are. And so when we talked about this, it itself was something fascinating. But then my dad told me something very interesting, which really stuck with me. कि अगर आप इस गली में रहते हैं, इस गली में तो आप साइकिल के अलावा कुछ लेके भी नहीं जा सकते, राइट? तो उस गली में अगर कोई मर जाए, उस घर से जनाजा कैसे निकलेगा? So he told me कि फिर लोग क्या करते थे कि लोग छत पे जाते थे और 10 घरों की छतें टाप के जनाजे को नीचे उतारा जाता था. And I thought that was such a weird, interesting detail that I'd never read in a story and I never read in हमारे. So इस तरह का जो historical excavation है, उसमें मुझे काफी mythological, historic या cultural excavation, इनमें मुझे कुछ interest है. So those are the kind of stories I'm always on the lookout for. In that way, I tend to look for the extraordinary in the ordinary and the ordinary in the extraordinary. And I think that is what a lot of Fantastica writers do. Borges is well known for this. Borges, magic realism के जितने भी लोग हैं, Salman Rushdie included, do this a lot. And I think that is the way a lot of us get inspired by this idea that just fascinates and thrills us. Because if an idea pleases and fascinates me, it will please and fascinate my readers as well. So just थोड़ा सा publication की side पे आ जाते हैं. These are short stories, and tell me if I'm wrong. You published some of these in some international magazines. या वहाँ पे मतलब already एक international audience had a taste of these stories. So when did you decided that you want to make these into a book format? And the reason I'm asking this is because book publishing का अगर थोड़ा सा financial aspect देखा जाए या local audience का देखा जाए तो there are थोड़ी सी एक struggling sort of phase चल रही है. If as far as what I have learned from a couple of publishers, indigenous publishers that I have talked to. So just share कि कोई आप लोग ने पहले, did you know that people would be more receptive to it in Pakistan? When I published the book in Pakistan, I had no idea how receptive Pakistanis would be at all. Frankly speaking, the way it started off was I've been publishing since 2012. Professionally, I think my first professional sale was 2013, early 2013. So professional sale, जब हम बात करते हैं, we're talking about a particular established rule कि भाई per word इतने पैसे आपको चाहिए. और ये हमारे रूल नहीं है, ये गोरों के रूल हैं, वेस्टर्न रूल्स हैं, अमेरिकन साइंस फिक्शन ऑथर सोसाइटीज के रूल्स हैं. तो उसको हम प्रो सेल या प्रोफेशनल सेल बोलते हैं मेरे जानरा में इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. तो मेरी पहली जो सेल 2013 में थी. सो आई पुट द बुक टुगेदर इन 2021. सो दैट्स ऑलमोस्ट 8 years of publishing, in other places. I published everywhere except in Pakistan. मेरी एक कहानी पाकिस्तान के एक मैगजीन में छपी थी 2012 में. It's called Vitriol in a magazine called Paper Cuts, जो देसी writers lounge का निकाला करते थे. And so I wrote one story in that magazine in Paper Cuts. So that was my first and last probably Pakistani publication for a very long time. And so I published in a lot of different places. वहाँ से compilation की तरफ जाने का idea इस तरह है कि when I moved to Lahore in 2019, I was talking to Musharraf Ali Farooqi and Amir Hussain Saab, and they both suggested that it may be a good idea for me to have a book in Pakistan for Pakistani audience, क्योंकि बहुत उनमें से मुझे
मेरी रीडरशिप मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में थी. It was not in Pakistan. Most people in Pakistan didn't even know who I was till Midnight Always came out. So the question was कि क्या होगा, अब हम इसको किस तरह करें. I didn't want to go with a major publisher in Pakistan के जैसे लिबर्टी बुक्स हो गया, रीडिंग्स हो गया, या इस तरह के कोई हो गया. आई वांट, और संगे मेल हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, बिकॉज आई वांटेड एडिटोरियल कंट्रोल. मुझे ये हमेशा हमें फिक्र ही होती है पाकिस्तान में कि यू डोंट नो कि जब कोई और करेगा तो वो क्या करेगा और किस लेवल तक करेगा, कितनी चाहत से करेगा, कितने पैशन से करेगा. So I wanted that editorial control. So we ended up deciding that it will be a hybrid project. कि मुशर्रफ अली फारूकी का हाउस किताब will publish it, but I will fund the book pretty much entirely. And so, you know, because I'm a doctor, मेरा source of income writing नहीं है खाली. So मैंने कहा, you know what I'll think of it as a project of love, as a passion project, and also a cultural project. So हमने उसमें फिर 9 पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इन्वॉल्व किया. उसमें हमने डिजाइनर हैं, उसमें हमारे बुक कवर आर्टिस्ट हैं और 7 इलस्ट्रेटर्स हैं. और हमने कहा कि बट यू नो वील स्पेंड मनी ऑन इट, एंड इफ वी लूज दैट मनी, वी लूज दैट मनी, कोई बात नहीं, बिकॉज वी वांट टू क्रिएट समथिंग जो कभी पाकिस्तान में इस तरह से शायद नहीं हुई, एंड नॉट इन दिस वे. So I had some templates in mind, but nothing like this really had ever been done as far as I know, especially mere genre mein. So I was willing to absorb the cost of it, and so it was a risk. Happily though, Pakistani readership, as we have talked about, there is a pretty ठीक-ठाक readership in Pakistan. People underestimate it. People keep talking about this fact कि नहीं यार पाकिस्तानी जो है 10,000 रुपए लंच पे लगाएंगे, 2,000 रुपए किताब पे नहीं लगाएंगे. I think while that is true, I don't think that's entirely true. I think writers don't know anything about marketing. Writing a book is the art or craft of doing this. Publishing is a business. So when you go about the publishing process, you have to switch hats. आपको एक दूसरा तरह से अप्रोच करना पड़ता है, और उसमें आपको मार्केटिंग भी करनी है, उसमें आपने लोगों को टैप भी करना है, उसमें आपने एक मार्केट ब्रांड प्रेजेंस भी बनानी है. आई एम नॉट एन एंटरप्रेन्योर, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट बिजनेस, बट आई नो पीपल हु डू. So I had a marketing team जिसमें हमारे दोस्त हमाद हैं who's involved. I had Mushba Saeed, a very passionate advocate for the book, who designed the book as well. And we had these artists, and then we had other people in the West, happily, जो कि मेरे work से familiar थे. So it all came together in a fortuitous way. And the book, actually, the first printing sold out in 4 months. Mm-hmm. An illustrated science fiction book, the first printing ran out in 4 months, which we thought was a remarkable success. It sure is, and you're right, because I also got to know about the book. I also know Musharraf Ali Farooqi, I also know Hamad, but I saw it on social media, and then I was like, guys, ye kya ho raha hai? And then they were like, okay, we are doing it, and is tarah karke. So you're absolutely right. There is a marketing component is jo itna, I would even say कि even जो main हमारे बड़े publications हैं, they don't even do that जिस तरह बाहर publishing houses करते हैं. एंड हम लोग तो एट टाइम्स डिस्कस भी करते थे कि ड्रीम जॉब है कि यार कोई पब्लिशिंग हाउस में हमें भी कोई जो है ना एक जगह मिल जाए एज ए कम्युनिकेटर मार्केटर, बट आई थिंक दैट्स सॉर्ट ऑफ लॉन्ग टर्म ड्रीम है उसकी. एनीवेज, टॉकिंग अबाउट यू नो द पाकिस्तानी रीडर्स एंड ऑडियंस एंड थोड़ा सा पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, लेट्स टॉक थोड़ा सा ऑन द राइटर्स साइड ऑफ द थिंग्स, बिकॉज आप इन्वॉल्व हो एक ऐसे प्रोजेक्ट में where you get to see the work of you know some budding writers in the science fiction genre. So share कि how, where do you see the future of writers? I won't say कि मतलब वो एक वो typical सा जवाब कि जी बड़ा bright है या कम bright है whatever, but what sort of storytelling are you seeing coming out of Pakistan in the English language? देखिए, पाकिस्तान is a very diverse country with many languages. English representation एक छोटा सा component है पाकिस्तान के overall cultural aesthetic का. So Pakistan ka adab, people have said this before me, and I agree, the best literature in Pakistan is probably being written in regional languages still. Yeah. That doesn't mean ke, but people also have to realize, and I think people don't sometimes, ke English is also a Pakistani language. ऐसा नहीं अब रह गया कि अंग्रेजी हमारी जुबान नहीं है. This might have been true 250 years ago. That's not true anymore. Yeah. So English पाकिस्तान की भी जुबान है. It has become हमारी रोजमर्रा की जुबान. इंग्लिश के बगैर आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर. आपका स्मार्टफोन तक तो अंग्रेजी में है for a lot of people, right? So मतलब ठीक है आप रीजनल लैंग्वेजेस करें, बट इंग्लिश को डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए एज अ रीजनल लैंग्वेज. आई डू थिंक इट्स रीजनल लैंग्वेज.
Maybe it's the language of the elite, maybe it's the language of an upper class, but more and more people are getting access to English every single day. So having said that, I think कि पाकिस्तान के अंदर हर तरह बहुत तरह के राइटर्स हैं जो the young writers who are that we see around us. And remember, जब भी हम अपने अराउंड की बात करते हैं, it immediately becomes a selection bias. It becomes a bubble कि मेरे आसपास वो लोग हैं जो मेरे genre में interested हैं. But then we have other people in other genres जो मुझे हमें शायद नजर नहीं आते क्योंकि वो हमारे circles में move नहीं करते. So from what we see around us, we see much more open-minded young Pakistani writers, award-winning writers, or writers who are working in journalism and media, and writers who are well-connected or write with both worlds, who have one foot in the Anglophone world and one foot in the developing world. Or वो writers are interested in all sorts of storytelling or all forms of storytelling. Visual भी है, graphic भी है, art की भी है, और किस्सा खानी भी है, दास्तान गोई भी है. So these writers, so हम जब एक question करते हैं हम कहाँ देख रहे हैं, I think I can't speak for everyone. I can only speak for a very small chunk that I see around me. And in this small chunk, I see a lot of interest in Fantastica as a form, as a mode of storytelling. ये लोग open-minded ज़्यादा हैं अपने बड़ों से. And you know, people talk about tradition all the time, but you know, traditionalists की वजह से हमारा मुल्क बड़ा ठीक-ठाक ossify हो गया. बंजर एक हमारी धरती बड़ी बंजर रही है पिछले 20 साल में कल्चरली स्पीकिंग, पिछले 30-40 सालों में, बल्कि आई वुड आर्ग्यू कि पिछले 10 साल तो बड़े बेहतर रहे हैं, 10 से 15 साल इन टर्म्स ऑफ कल्चरल ग्रोथ. उससे पहले बड़ी बंजर रही हमारी जमीन for 20-30 years. So I think the new kids on the block, they show a lot of promise. They're more engaged. There is more intersectional activism happening on the ground. ये अपने हकूक के लिए औरत मार्च भी करते हैं, बलोची हकूक के लिए, सिंधी हकूक के लिए, पख्तून हकूक के लिए लोग खड़े भी होते हैं, और यही लोग फिर आर्टिस्ट भी हैं. So this sort of counter cultural movement intersecting with literature is very promising. और ये खाली अंग्रेजी में नहीं, उर्दू में भी कर रहा हमें नजर आ रहा है. मैं आज ही बल्कि अभी I was at a book club अभी आज सुबह, एंड वो उनसे जब हम गप लगा रहे तो उनमें एक बात यही हमने कही कि अक्सर औकात हम लम्स को या IBA को या NCA को या पंजाब यूनिवर्सिटी या GC को या HSN को या हबीब को व्हाटएवर, हम इनको या बड़े बड़े हम कहते हैं एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं. बट यू नो, अगर आप इन इंस्टीट्यूशन से भी अगर अच्छा काम करें तो इफेक्ट समटाइम्स डज रिपल आउट बोथ वेज. यानी कि अगर पुराने कुछ ख्यालात के लोग हैं वहां से एक इफेक्ट निकलता है, कुछ नए इंस्टीट्यूशंस जो जरा और तरह की कल्चर है वहां से निकलता है, और समवेयर इन द मिडिल पीपल कैन मीट. यू नीड टू फाइंड कॉमन डिनोमिनेटर्स ना, बजाय ये कि हम फ्रैक्शंस क्रिएट करें कि ये एलीट है और ये कम एलीट है. You need to find common denominators. So I think there is this movement where speculative fiction, जो मेरा genre है, या genre per se, या non-realist fiction, irrealist fiction, traditionally irrealist fiction और literature का interest grow ठीक ठाक कर रहा है. And we are seeing this all across the country. हमें तो नजर आता है, अब मुझे नहीं मालूम जो तारीखदान हैं जुबानों के और सकाफत के और अदब के, उनको क्या नजर आता है, मैं उनके तरफ से नहीं कह सकता. Yeah, I agree. I think obviously, and I think this is not something that's limited to Pakistan. हर जगह society में, किसी भी field में, there are at times bubbles. But the way the goal is कि जो different जो ये blocks हैं या bubbles हैं, they have a common ground space where they can even come, meet, disagree if they want to, but still there needs to be a common space where every sort of opinions and art forms can sort of exist. So obviously the goal is that, and hopefully we get to see that in our lifetime at least. Moving on, and this will be sort of my last question, and I'll then open it for Hamad to ask his questions if he has any. As you mentioned, Pehli bhi, the Midnight Doorways is something of a unique book in the sense that yes, it is speculative fiction to hai hi, but there is an illustration aspect of it. Usually हमारे यहाँ जो जनरल नॉर्म है वो ये है कि until unless it's a hardcore graphic book, तो ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट वर्क जो है वो कवर पे ही होता है, and that's the done thing about it. But you decided to include illustrators, उनको credit भी दिया, and every story had a one-pager illustration, which I think was very unique, and it was pretty
intensely done in the sense that when you were done with the story, you looked at the picture. Yeah, you looked at the picture first if you're like skimming through the book. And when you went through the story, that basically summed up the crux of the story. So what was that process like? How did you select those illustrators? Unka kya, because you are, I know, one of a key believer in, paying the people who pursue these art forms. यहाँ पे तो यूजुअली वो फ्रीलांसर्स का जोक है ना कि फ्रीलांस का मतलब है कि पैसे नहीं देने हैं आपने. So what was that selection process like? किस तरह आप लोगों ने वो ढूंढा? टीम थी, individually you did it? Just share a bit about that. So illustrated manuscripts या जिनको illuminated manuscripts बोलते थे इस्लामिक हिस्ट्री में, ये बड़ा एक कॉमन हमारा होता था. अगर आप पुराने जमाने के हमारे मुसविदात निकाल के देखें तो you would see lots of illustrations. और on the in the Muslim world, the fact क्योंकि हम एनिमल फिगर्स को रिप्रेजेंट नॉर्मली नहीं करते थे, पिक्टोरियली या ह्यूमन फिगर्स को, I'm sorry, नहीं करते थे. So Muslims actually specialize in geometric art forms. तो हमारे पास geometric art forms की illumination, Quranic manuscripts की illumination in different ways, या Islamic books की या religious books की या anything, उसमें illustration used to be a pretty big thing. The actual aesthetics of the book बड़ा उसको कंसिडर किया जाता था कि बड़ा जबरदस्त तरीका है काम करने का, which somewhere along the way maybe, you know, somewhere along the way it started getting lost mass production के अंदर. अगर आप आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, बल्कि अभी भी आप चले जाएं वेस्टर्न साइड पे, तो जो क्लासिक आपके नॉवेल्स हैं या स्टोरीज हैं उनमें भी इलस्ट्रेशंस होते थे. अगर आपको याद हो, टेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड इमेजिनेशन बड़ा मशहूर था एडगर एलन पो का, और सर आर्थर कॉनन डॉयल के शेरलॉक होम्स, एंड आप देखते थे उसमें होम्स की तस्वीर बनी हुई विद पाइप एंड विद दैट चेकर्ड हैट और चेकर्ड कोट, और वो इमेज इतनी सॉलिड है कि पॉपुलर कल्चर में इट इज द ओनली इमेज ऑफ शेरलॉक होम्स, द गॉन्ट मैन, टॉल मैन, और उसके साथ वॉटसन है बड़ी मूंछों वाला, and that has become the popular representation of Sherlock Holmes. So that illustration has a lot of staying power, culture shaping power. तो हमने जब ये illustration का सोचा, हमने ये सोचा कि एक मुशर्रफ की भी एक है वो The Merman and the Book of Power, जिसमें उसने illustrations बनवाए थे इस्लामिक creatures के, जो बड़े जबरदस्त इलस्ट्रेशन बनाए. हमने कहा जब हम अगर ऐसा करें तो, मुझे लोगों ने कहा फिर आप एक आर्टिस्ट से करा लें. मैंने कहा लेकिन अगर एक आर्टिस्ट से कराएंगे इट्स ग्रेट, बट टोनल कंसिस्टेंसी तो आ जाएगी, बट देन वी वोंट सी द डिवर्सिटी एंड रिचनेस जो इतने सारे मुझे रोज नजर आता है. आई सी दीज ग्राफिक आर्टिस्ट एंड दीज डिफरेंट आर्टिस्ट वर्किंग हार्ड. तो मैंने कहा हम उनसे करते हैं. तो फिर देन वी पुट आउट अ कॉल, और उस कॉल में वी हैड अबाउट 20-25 folks who sent us their portfolios. उसमें से हमने select किया, and I have a friend who's a very good artist. I got him involved and he helped me vet the artist down to a list जो हमारे लिए workable थी. फिर हमने उसमें से decide कि cover artist हमारी aesthetic के लिए कौन जाएगा. And the artists that we ended up selecting, we had Rohama Malik who did cover art, Mushba Saeed who did design, Samia Arif, Amil Hasnan, we had Umar Gilani, Kehkashan Khalid, we had Sania Kamal, Rumesa Fawad, and I don't know if I'm forgetting anyone, but we had all these artists involved, and they were each given a story to illustrate, and then they went through different drafts, and then we sort of approved those drafts, and at the end, the outcome, happily and surprisingly, because things never work out the way you want them to, but in this particular case, everything seemed to click together, and the result was this book. The illustrations in this book, the artists have full rights over them. Our only right is reproduction in any subsequent printing or translation of the book, or the book itself. Artists preserve all rights. Everyone was paid. There were 2 artists who didn't expect to be paid. They were also paid because हमने standard रखा हुआ था सबको pay करने का, and we insisted on paying. And Mushba इतना उसने काम किया कि जो original उसके हमने payment रखी थी, we ended up paying her more than that because we just didn't feel comfortable. She was just working too hard, and we knew it. So that's the way the book came together. It was really a community effort. No, this is really good, and obviously, other than the fact that the outcome is pretty amazing, I think this is a good precedent, and I think one step at a time. He, जो भी specifically जो cultural spaces हैं जितनी हमारी construct हो गई, and you also mentioned कि 20-30 years, so has been pretty much barren.
तो उसको आई थिंक रिकल्टिवेट करने के लिए जो एफर्ट डाल सकते हैं, एंड आई थिंक फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसी तरह फिर हम आई थिंक काफी वो कॉमन होता है ना कि जी इंटरनेशनल लोगों को क्यों नहीं पता पाकिस्तानी काम करना. आई थिंक मार्केटिंग कम्स अंडर इट. अभी रिसेंटली आपकी बात के दौरान मुझे ख्याल आया somebody reached out to me from and asking कि जी he is doing some research for his PhD या something MPhil type के लिए on South Asian illustration art. तो पाकिस्तान का क्या बुक्स हैं? एक दो तो ऑब्वियसली आई हैड इन माइंड मुशर्रफ की योर्स, एंड एक मेहर ने जो ग्राफिक नॉवल अभी एक पब्लिश किया है. सो आई हैड टू रियली सर्च एंड आस्क अराउंड कि भाई कौन कौन से हम सजेस्ट कर सकते हैं. एंड देन यू रियलाइज कि है काम है, लेकिन इट नीड्स टू बी पुश्ड एट अ ब्रॉडर मार्केट. करेंगे इसे तो लोगों को पता चलेगा. With this, I will open the floor for Hamad to ask a question if he has any. Hamad, over to you. Hello, Fatima. Hello, Usman. Hope you guys are doing well. हाँ जी. Can you hear me? Yes, we can hear you. Great discussion. अभी मैं सुन रहा था. Obviously, बहुत चीजें पहले पता है. बहुत मजीद बात सुन के मजा आ रहा है. I just had one thing in mind, because you have a background as a writer as well as हमने अपनी बात भी की थी. Reader का भी आपने perspective बताया अपना, and obviously a medical doctor. Similarly, आपका जो experience है, exposure है, वो पाकिस्तान culture का भी है, American का भी है. वहाँ पे भी आप interaction करते रहे हैं with other writer and readers. So when it all comes together, so how do you think it influences the final product you are making? Is this something that everything comes together, या आप उसको अलग-अलग रखते हैं when you're writing something? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लिखारी कोई भी राइटर आइसोलेशन में काम कर सकता है, that they can pass their influences, because a lot of time writing के अंदर when we think something is happening on a conscious level, there is a lot of subconscious bubbling happening and boiling happening at the same time. कभी कभी आप ऐसी चीजें लिखते हैं जो बाद में आपको कोई और पॉइंट आउट करके बताता है कि आपने ये लिखा, इसका ये शायद मकसद है, एंड यू सरप्राइज्ड कि हाँ ये तो मैंने सोचा भी नहीं था लिखते हुए कि ये चीज इस तरह से होगी. Which is actually one of the glories of literature and art, is what other people bring to it and which can enhance the effect of the art of the writing. I think मेरी राइटिंग में, मैं चूंकि अंग्रेजी में अब ज्यादा कंफर्टेबल, मैं उर्दू में इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ लिखने में. मैंने उर्दू में लिखा हुआ है अपनी जवानी के ज़माने में और मैंने उर्दू में नज़में भी एक ज़माने में लिखी थी, शायरी भी की थी, बट मैं उर्दू इज़ नॉट माई प्राइमरी लैंग्वेज एनी मोर, ऑलमोस्ट सर्टनली. That has to be English now. तो I will say कि मेरा idiom अगर हम कहें तो definitely American side पे ज़्यादा lean करता है rather than British. But मेरी जो language का लिखना, मेरे लखाओ, मेरी जो writing की lyricality, अगर मतलब if I can say so, the way the language flows, the music of the language in my ears, it is uniquely subcontinental. Especially when my characters start interacting with each other and when they start talking to each other, जो जिस जुबान में वो बात करते हैं, I can sort of hear in my head this Pakistani person talking. I hear that neutral subcontinental accent जो पाकिस्तानीज़ का होता है, which is neither American nor British, somewhere in the middle. और उनके मुहावरे भी अंग्रेजी में आते हैं. I remember Resurrection Points मेरी कहानी है. मैं जब लिख रहा था, there's a sentence where this wise old man is telling the boy to be humble, and then the next line he says is, it is the bough laden with fruit that bends the most. फलदार शाख झुकती है ना, उर्दू में मुहावरा है हमारा. But I had never read that muhavara in English, and it came to me and I realized I was amused by it because it makes total sense, and we should use these axioms and these proverbs from our part of the world. Sometimes जब आप उनको translate करते हैं तो they sound new even to you. Suddenly उनमें एक नई जान आ जाती है जो पहले उर्दू में या पंजाबी में जो आप सुनते थे शायद नहीं थी. जैसे पंजाबी में एक मुहावरा है, मुल्ले दी दौड़ मस्जिद तक. जब उसको ट्रांसलेट करते हैं, it becomes something different. All of a sudden it becomes something different, something new. So translation acts as an act of rejuvenation sometimes. So I think मेरे influence इस तरह आके मिल जाते हैं. I'm not a scholar of Urdu or English. मैंने कोई MA, MFA को PhD नहीं की हुई. मैं एक simple लिखारी हूँ. I am just a writer who's trying to bring things together and tell stories. उससे क्या निकलता है, that is unique to my own experience.
or my own absorption of influences from my childhood predominantly, and then the last 15 years of my life as a professional writer, or last 10 years of my life as a professional writer. Thank you so much for your time. This was really fun, and hope you will be writing something else, and I'll have you back on the podcast. And until then, congratulations on winning the Crawford Award, and hopefully more such good news from your end soon. Thank you very much for having me, Fatma. Thank you, Ahmad. I hope you Thank guys have you. a good day. Thank you.